while creating a lengthy program that contain multiple functionality and repetitive statement, you can divide the program into the modules. Okay, so when you have a complex program, to divide the complex program into simple, we're using module. Okay, so dividing a program into module, it make it easy to understand and debug. The purpose is to call each module whenever any functionality is associated with the same needs to be performed. So while creating a lengthy program that contain a multiple functionality and repetitive statement, so you can divide the program into module where each module perform a task separately. Okay, जेटा हम पाखरे गोटे मल्टीपल प्रोग्राम रहिबो तो एटा पॉसिबल हे नथाय गोटे लोक सब काम करि परिबो सेति पय कोन हुए ना प्रोग्राम टा को डिवाइड करा जाय छोटो छोटो मॉड्यूल. So dividing a program into smaller module, we're using modular approach. This purpose to call each module whenever any functionality associated with the same needs to be performed. Okay, so structural programming technique, it provide a way. हमें प्रोग्राम को हमारा जो concept हमें use कर लेता है वो कैसे divide करेगा. Structural programming technique provide a way to break a long and continuous program into a series of individual modules. तो हमारा जो long program अच्छी ताको छोटा छोटा module ले convert करिया पे हमें use करेगा structural programming. Modules can be integrated through a main program. It form the main program. You can call each of the module. The structural programming technique, it provide a way to break the long and continuous program into a series of individual program. बड़ा बड़ा program को हमें छोटा छोटा program रे convert करते. Okay, and each module तो हमें जब छोटा कर दवा ताले ये जो छोटा छोटा part हमें जन को assign करिवा तो every person is responsible to do the work. माने सब लोगों का responsibility रहिबा से specific work perform करिवे. So that is for the structural program. तीनटा पॉइंट लिखो. What is structural program? इटा हला हमर मेन प्रोग्राम. ए मेन प्रोग्राम ता हम तीनटा पार्ट रे कन्वर्ट हला. मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3. हमें ए गोटे मेन प्रोग्राम को तीनटा पार्ट रे एटा होची हमर कोन प्रोग्राम टा कोन तीनटा पार्ट रे कन्वर्ट कले. कन्वर्ट कला परे एटा सब मॉड्यूल रे सब ऐड हला. दा मॉड्यूल 1 रे ऐड हला, मॉड्यूल 2 रे ऐड हला, मॉड्यूल 3 तीनटा पार्ट रे में डिवाइड कले. ए तीनटा पार्ट टा गोटे मेन प्रोग्राम रे कॉल हो. सेटा तीनटा स्मॉल अप्रोच हमें यूज कले.
এটা দেখো, while dividing a complex program into a module, you can declare the variable within the begin and end block. तो हमें जो तरह complex program करिवा ता भीतर हमें begin और end block भीतर हमें program define करिवा. The block in which the variable are declared is the called as scope of the variable. जदि हमें begin and end block भीतर variable टा define करूचे और begin and end block बाहर जदि variable define करचे, so depending upon the place where you variable define, that is called as the scope of the variable. जदि variable टा inside begin and end भीतर define करा होचे, तार scope different. जदि variable टा outside of the begin and end block भीतर define करा होचे, तार scope different रहेगा. The block in which the variable are declared is called as the scope of the variable. The variable can also be declared outside of the begin and end block of all module and outside of the main program. Okay, so let's write the three part. In the point lekha. ସରିଲା ସାର୍। Okay.
So depending upon the place where the variable are declared, the variable have the following type of scope. One is global scope, another is local scope. The variable that can be used anywhere in the pseudocode have global scope and are called as the global variable. And variable that are declared outside of the module of the begin and end block are called as the main pseudocode. Okay, so जो variable टा हमारा begin आउ end block बाहर define हवो तारा scope टा होची global आउ जो variable टा हमारा begin आउ end block भीतर define हवो तारा scope हैला local. तो global and local ये दीटा scope हमारा define करा हवो. Okay, so depending the variable that can be used anywhere in the pseudocode have the global scope and called as global variable. Global variable are declared outside of a module or begin and end block of the main pseudocode. Okay, so right. Sir, sorry, Yola. ସମସ୍ତେ ଲେଖିସାରିଲ? तो एटा देखो ये जो प्रोग्राम टा हमरा डिफाइन करा जाय छै एटा होची डिस्प्ले एंटर फर्स्ट नंबर एक्सेप्ट नंबर डिस्प्ले एंटर सेकंड नंबर एक्सेप्ट नंबर 2 देन कॉल मॉड्यूल सम माने ये गोटे प्रोग्राम टा को हमें गोटे अलग जगह डिफाइन करते कॉल मॉड्यूल सम बिगिन एंड एंड तो एटा हमें गोटे सेपरेटली डिफाइन करले तो जेतबे हमें दरकार हो ये मॉड्यूल टा में कॉल करले फर्स्ट एंटर फर्स्ट नंबर एक्सेप्ट करले एंटर सेकंड नंबर एक्सेप्ट हैला कॉल मॉड्यूल करले मॉड्यूल टा एक्सेप्ट हे बुझेला ये प्रोग्राम टा लिखो कॉल मॉड्यूल्स बुझी पाइले ना एटा ना बुझी पाइले प्रियदर्शिनी रुद्र मिलन आज्ञा सर टिके आउथर कहबे एटा देखो एटा प्रोग्राम टा हमें अलगा जगह रे डिफाइन करे बिगिन एंड एंड सम नॉर्म 1 एंड नॉर्म 2 बुझी होची माने एटा ए प्रोग्राम टा हमें आउ गोटे मॉड्यूल रे डिफाइन करले माने सम टा को अलगा जगह रे रखिले एटा ला मेन प्रोग्राम जेतबे मेन प्रोग्राम टा रन हला एटी हमें वेरिएबल डिफाइन कर देले न्यूमेरिक नॉर्म 1
norm to end sum এটি আমরা ডিফাইন করলে enter first number accept norm 1 enter second number accept norm 2 call module तो module टा कॉल हला कॉल हला पर दीटा नंबर से ऐड करके एटी डिस्प्ले करा डिस्प्ले सम बुझेला सर दीटा पेज रे रहइबो सर ना गोटे पेज रे दीटा टेबल रे रहइबो सर सेटा दीटा डिफाइन करा जाय बुझेला देखो
ସାର୍ ସରିଗଲା। ସାର୍ ସରିଗଲାଣି। Variable that is declared inside the begin and end block of a main program or function or procedure have the local scope are called as the local variable, and it is created when the statement which is declared an internal variable in the begin and end block. It is go out of scope when the control transfer the statement outside of the begin and end block. Okay, so variable that is declared inside the begin and end block is called the main program, function or procedure of the local scope. तो जो वेरिएबल टा बिगिन आउ एंड ब्लॉक भीतर डिफाइन हबो सेटा होची लोकल स्कोप, बिगिन आउ एंड बाहर जोरा डिफाइन करा होची सेटा को लोकल स्कोप. Local variable are created when the statement which is declaring the internal variable in the begin and end block is executed. Is go out of scope when the control transfer to the statement outside of the begin and end block. Okay. এটা লেখো এটা local variable. ସାର୍ ଏଟା ଆମେ ଲେଖିବା। हाँ local variable टा ଲେଖो।
सर सॉरी वाला Okay. ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসে আমরা